Yes, Sanjay. sir. Hello, friends. Hello, sir. Pranay. Welcome, welcome to the new session of our question and answer. So, Sanjay, we have one question which is related to 2023 applicants for H1B visa. The USA lawyers are saying in 2023 they have seen H1B revoked since notice for year 2022 and earlier H1 applications, but not for current year 2023 H1 so far. Mhm. Does it mean year 2022-21 H1 applicants who are still in India should wait and watch to ensure there is no notice sent by USCIS to them or to their employer? Please advise. Okay. So I'll cut this into two questions. First, I'll try to cover what exactly is happening by USCIS, the actions against all these H1B revoke and fraud related topics that we're talking about. So, key question is based on the observations of the companies and the applicants, the something called NOIR notice, the notice of intent to revoke the H1. So it is basically a notice given by those H1 applicants who already have H1 with them, they are already stamped, or their petition is already approved. If USCIS decides to revoke their H1 for some reason, then USCIS sends them this notice called NOIR. So observation is that, not the applicants of 2023, but all the earlier applicants between March 2022 to March 2020. So basically we're talking about 2020, 2021 and 2022 applicants. Only these applicants are getting these NOIR notice. So obviously, this year's applicants have not even applied for their H1 petition, so they cannot be sent NOIR notice because first H1B petition has to be approved to be revoked. Okay, so NOIR can't be sent to them. Okay. Second thing is there is something called NOID, Notice of Intent to Deny. So now those who have done H1B registrations in year 2023, they have done the registrations, they have been selected in the lottery, but they haven't even applied for it. So unless you apply, you can't be denied. There can be one thing which I'm not legally aware, because again, with a disclaimer that, this is not a legal advice channel and none of us are legal experts. We are just talking based on the observations and of the content on the social media, USCIS, and talking to different lawyers and the applicants. So for this year, there is no action that has been reported by anyone so far in our knowledge by USCIS, either in terms of NOIR or NOID. Because NOID, that denial can be done only after it is applied. What we are not aware that even those who have done the H1B registrations in March 2023, they can be sent the denial notice or not. Okay. But bottom line is that for this year, there is no action taken by that. But for the earlier years, like March 2022, March 2021, and March 2020, all the applications which were sent in last 3 years before this year, and those who were already have got approved, particularly in this year, there are a lot of NOIR notices which has been sent to them. And mostly these are for those applicants who have already got the H1 petition. Some of them maybe also be in the USA, but either is the case. I think in all these cases, this is for sure that, most of these will belong to the category where we are talking about, they had the case of multiple H1B registrations or multiple H1B applications. Okay. So now the question is what to conclude from this. So what to conclude from this is that, whatever is your current status,
if you have applied in years earlier than this year, then you should rather wait and watch wherever you are. Maybe most of them might already be in USA. Even if you are in India, then you should rather wait and watch to see that, what exactly is happening. Because, USCIS takes a lot of time to take action. Okay. Uh, and they might have their own criteria that in what sequence they will send. But maybe they will start with year 2022, then they will follow with those who have applied in year 2021 and so forth. I mean, seriously, we don't know. So we are just going by the observations that, which are the people who are getting these NOIR notice, the notice to revoke H1 by them. Okay. So that was the first piece of it, that what we should infer from this. So inference is that, yes, the action from USCIS has already started. People have started getting the NOIR notice to revoke H1. What it means is that your H1 will be revoked. What it means is that, once your H1 is revoked once, even in future, you won't be able to apply. Even if you are able to apply and USCIS selects you, it's for sure that they will find the history of your case, and most probably it will be revoked again, even if you get approved. Okay, so that's what it means. Now, Pranay, coming to your second part of the questions, all these observations that, people have started getting notice of H1B revocal for March 2022 and earlier years. What should these current H1 applicants who are still in India, have not even traveled to USA for whatever reason, should they wait and watch and wait for the notice for USCIS? I will suggest yes. Two reasons for that. One is that, we have never seen anything like this. And second is that, we have never seen these kind of actions by USCIS of such a magnitude. So both of them make it very, very clear that there is some kind of a storm already in place, some kind of hunt is already in place to find all those H1 applicants who have done multiple applications, either this year or earlier years. So we are talking about applicants between March 2023 to March 2020. Okay. Even if those who have applied in March 2023, they have not got any notice yet, in our knowledge. But those who have done it earlier, they can expect, and they should seriously expect that, in case they fall into that category of multiple applications, then days are just numbered that, they'll get that notice of intent to revoke it. For those who haven't done multiple registrations or multiple applications, they have nothing to worry. If they are in India, they should apply for upcoming jobs in USA. Economy is not in good situation right now, but whenever economy is better and better opportunities arise, we would suggest that, they should apply for it. Okay. So I hope that answers your questions, Pranay. Any follow-up on that? Definitely, Sanjay. Thank you for a detailed insight. But I think viewers will get a quite good answer for the question that has been raised. Okay. So along with this, there is one more question that we have, is that will there be a second lottery to the current H1 visa situation? And if yes, by when it will happen? Will it be July 2023? Please advise. Yeah, I think that's a very good question. And logically, a lot of people who haven't got selected in lottery in March 2023, they're asking such questions. So there's no definite answer, and there is no communication from USCIS regarding this. But this is how I would put the answer logically, and which is that,
more than 50% applicants had multiple registrations done. So you can assume that if we go by the simple probability also, that more than 50% selections also might have happened from them. Okay. So even if not exactly 50%, if it is 40% or 30%, definitely there is a gap that would arise, if those who have done the multiple applications, they are weeded out, they are deselected from the selections done earlier. So definitely I see a great chance that either based on NOIR notice or some actions taken by USCIS, whatever is the case, I think in either case, we can expect that, by the end of June, USCIS should be in a better position to kind of conclude that, how much is the gap of those who are selected earlier versus how many it should select. Okay. So short answer is yes. I think we are expecting that second lottery might happen. There's no definiteness. But based on the percentage of people who have done the multiple applications, based on the sense of discouragement we are observing in the applicants as an intention not to apply because they're also scared of the some actions being taken by USCIS. So in such situations, even number of applicants I would expect to be much less this year. And I would even suggest that those who are very doubtful about their case, either done deliberately or done by employer or whatever is the case, they should rather avoid, pushing their applications further, rather try next year, or in future. Okay. Yeah, in case lottery happens, then in the earlier years, typically it has happened either in July sometime or in early August. So I will say most probably by July, we should expect second lottery might happen. If not, probably by August for sure, I would speculate. It's still a speculation, but I would expect that in July, August, second lottery might happen. Thank you, Sanjay. Sanjay, what is the difference between NOIR and NOID? Like notice of intent to revoke and notice of intent to denial. Okay. So I think we can look for this information in USIS also, but I'll share in some detail about this. So basically those who have, the full form is, notice of intent to revoke H1 and notice of intent to deny H1. Okay. So basically for all those H1 applicants, which either in the current year or in the past years, they already have been given H1 applications, they have approved petition, or they're already in USA working already there. They have some active H1 going on in use. So in those cases, in case USCIS finds a ground which it doesn't like, and the person has been in the H1B status in a call it illegal or call it something that USI doesn't like to be very close to legal, then they can take a final decision, and the final decision is by USCIS. If they decide that H1B should be revoked for a person, then they send to the current employer of that person this NOIR notice. Okay. One thing I would like to highlight is that NOIR notice can happen to your current employer, but the issue why NOIR has been sent may be related to H1 done earlier than that. What I mean is that, let's take a case, a person has gone to USA, say 3 years back in 2020. And after the first H1, they have transferred their H1 to employer 1, then employer 2 and employer 3. So even if there is an issue with one of the earlier H1s, the notice will be sent to the current employer only because they are relevant. Because only through that current employer, the person will get notified. But basis can be earlier H1 also. So
point I'm trying to highlight is that, even if you have changed your employers over multiple years in USA, if any of your earlier H1 had some issue, either first one or later one, for whatever reason, then USCIS can decide later that they need to revoke your H1, then they can send you that notice. So that is NOIR. NOID is for those applicants which are not yet H1B approved, but their H1 petition is already in process. So for whatever reason they decide that this person is not eligible to be given to approved H1B petition, then they send you NOID, notice of intent to deny. So typically in the H1 process, in case it's a very doubtful case, then maybe this is one of the first thing you will get. Or sometimes even after first H1B petition case, appeal is done, then this may be the last thing also that you get. But regardless of it, whenever you get NOID, NOID means that you haven't been found eligible to apply for H1 yet. Though in the prima facie, in the earlier case, applications were sought by you. But even in the later considerations, if they find something which was not known to them, or USAIS can decide, it has a discretion that it can decide that there was something that they haven't found okay, and then they can decide, that they can send you NOID. So just to put it briefly, NOIR you get after H1B petition is approved, and NOID you get before H1B petition is approved. But in either case, result is the same, that you are denied of continuity on H1 going forward with it. Okay. Of course, effect will be very different. In NOIR, maybe you're already in USCIS, you have settled with your family and kids and all. So impact will be much larger. NOID is still earlier stage, you haven't still been in USA. So of course, it's a disappointment in both cases. But in NOID, yeah, your impact, direct impact on your lifestyle is not that much. But yeah, you lose the chance of going to USA with that H1. That's a sad news for you. Okay. थैंक यू संजय। संजय, एक चीज जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है वो ये है कि H1 एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया एक एम्प्लॉयर को, उस एम्प्लॉयर ने अपने सिस्टर कंसर्न कंपनी के थ्रू उसका 10 जगह अप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और एप्लीकेंट यूएस में चला गया एंड उसने जॉब कर रहा है, वेल सेटल है, अपने लाइफ में वेल सेटल है, उसके फैमिली भी वेल सेटल्ड है, और यहाँ यूएससीआईएस को पता चलता है कि उसके एक्स एम्प्लॉयर ने ये काम किया है और उसको NOIR भेज दे रहे हैं। तो इस केस में क्या वो जो अभी H1B में जो वहाँ जो काम कर रहा है, जो एप्लीकेंट जो वहाँ पे वेल सेटल्ड है, क्या वो यूएससीआईएस में या कहीं भी किसी भी फेडरल ब्यूरो में वो अपने इसको अपील कर सकता है कि मेरे साथ मेरे इंटेंट मुझे बताए बिना ये काम हुआ है, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, और अब मुझे आप NOIR दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं आप मेरा वीजा रिवोक कर देंगे, तो क्या ऐसा होता है या वो कैंडिडेट जो वहां पर है वो ऐसा कर सकता है? Again, starting with good question, with legal disclaimer that it's not a legal advice from our side. So based on what I have heard from different immigration lawyers is कि आपके पास कोई भी केस हो, कोई भी नोटिस हो, आपको अपील करने का चांस यूएसए में हमेशा रहता है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसआईएस H1 इस केस में भी है, तो आपको NOIR का नोटिस आए, NOID का नोटिस आए, कोई भी नोटिस आए, आप अपील कर सकते हैं। सो दैट इज द शॉर्ट आंसर। इसका तरीका मैं इन जनरल पहले ये बोलूंगा कि किसी की अभी कोई भी स्थिति हो, या 2023 के एप्लीकेंट हो या पहले के हो, और जो पहले के हो उनका NOIR का केस जैसे आपने बताया वो वाला केस हो, हर केस में आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि जिस भी लॉयर से आप टच में रहे हैं या अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, या यू कैन फाइंड अनदर लॉयर आल्सो इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, तो आप हमेशा एक अपने लॉयर के कंसल्ट में रह के ही अपने केस को डिस्कस करो, क्योंकि हर केस बहुत यूनिक होता है, ठीक है। तो लॉयर को इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि वो आपके केस को थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं,
तो बहुत पहला असेसमेंट उसका ये होगा कि क्या केस इतना स्ट्रांग है कि इसको हम लोग अपील कर सके नहीं कर सके, क्योंकि अपील करने का प्रोसेस यूएस में बहुत कॉस्टली भी है. ऑल द लीगल फीस बाय द lawyers, even the process is very slow also. It takes a lot of time, it takes a lot of energy and money as well. Okay, तो पहले उसमें मेरिट है या नहीं अपील करने का, ये एक असेसमेंट किसी लॉयर को आप कंसल्ट कीजिएगा तो आपको मुश्किल से वो फ्यू $100 दे के आपको काफी अच्छा असेसमेंट दे देगा. ठीक है, एंड दे विल ऑल्सो टेल यू इन अ कन्विंसिंग वे कि केस बनता है कि नहीं बनता है. ठीक है, यदि हम ऐसे लॉजिकली सोचें कि केस किस केस में बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में जहां आप बहुत श्योर हैं कि आपके तरफ से कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर को ऑलरेडी था कि मेरा 1-to-1 एप्लीकेशन ही कीजिए, मेरा कोई भी मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कीजिएगा. एंड इफ दिस हैज हैपेंड बिफोर H1 वाज अप्लाइड फॉर यू, और ड्यूरिंग जब आप डिस्कशन कर रहे थे, जब वो ऑफर लेटर आपको मिला था, व्हेनेवर दैट हैपेंड, ये सारे कम्युनिकेशंस जितना आपके पास है वो एज अ प्रूफ आपके लिए काम करेगा कि आप अपनी तरफ से आपने बहुत क्लियर कर लिया था कि आपका कोई इरादा नहीं था ऐसी किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने का. तो आपका क्या है कि आपका एक उसमें पार्टिसिपेशन बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे. ठीक है, उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉयर ने उसके बाद भी यदि कुछ अच्छा नहीं किया है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ गड़बड़ हुआ है या जो भी हुआ है, उसके चलते जो है वो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर पे मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि बेसिकली उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपका इंटेंट ऐसा कुछ नहीं करने का था, ये बहुत क्लियर हो गया है फ्रॉम योर कम्युनिकेशंस. तो आपको ऐसे प्रूफ आपके बना लेने चाहिए. ठीक है, ये जो फ्यूचर में अप्लाई करेंगे मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आपका एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताते भी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग ऑल एम्प्लॉयर्स आर लाइक दैट, but there are certain cases where it has been found that it has been done like this. तो ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए स्ट्रांगली ये रिकमेंडेड है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन और उनकी तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट, दोनों के लिए आप इंसिस्ट कीजिए कि आप एक्नॉलेज भी करो मेरे को एज ए एम्प्लॉयर कि आप ऐसा मेरे लिए नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना, ये एक इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है. तो आई एम श्योर ये प्रैक्टिस जो अभी गुड टू डू प्रैक्टिस था, बट मेरे ख्याल से ये मस्ट प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, बोथ फ्रॉम एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव. ये एक अच्छी चीज होनी चाहिए. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको NOIR यदि नोटिस मिला है तो एज पर लॉयर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं, हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, बट वो यही बोल रहे हैं कि कंसल्ट योर इमिग्रेशन लॉयर इन USA जो इसके एक्सपर्ट हैं. आपके पूरे केस को वो स्टडी करेंगे, आपके NOIR नोटिस को स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट स्टेप टू डू. ओके, बट इन मोस्ट केसेस अनफॉर्चुनेटली ये मिला है कि ये बिल्कुल ही एक रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है कि एम्प्लॉयज इतना इंसिस्ट करके ये कम्युनिकेशन खुद करते हैं या उनसे एक्नॉलेजमेंट की मांग करते हैं. ये नहीं होने के केस में बहुत ही मुश्किल है ये कह पाना कि कोई भी स्ट्रॉन्ग केस फॉर अपील बनेगा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई भी डिजिटल प्रूफ नहीं है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को ये डिलिबरेटली बोला है कि मेरे लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशन ना करो, ठीक है ना, तो इंटेंट टू प्रूफ क्या है वो आप पे ही आएगा कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने उसको लिए मना किया था. ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने आप को बचाने के लिए भी बोल सकते हैं कि नहीं, हमने तो वर्बली एग्री किया था कि हम ऐसे करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए H1B लॉटरी निकलने की. तो क्या है कि अब सब पार्टी जब आती है तो सब अपना अपना केस अपने लिए लड़ती है. ठीक है ना, जब आप साथ में काम कर रहे हो सबका उसमें फायदा है तो अलग बात होती है, बट व्हेन इट्स फाइट टू सेव योर सेल्फ तो सभी अपने अपने बचाने के लिए सारे पॉइंट अलग अलग करेंगे. लेकिन तो उस केस में आपके पास जितने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स रहेंगे, जितने आपके पास कम्युनिकेशंस रहेंगे, उतना ही आपका चांस ज्यादा है कि उस बारे में आप अपने आप को बचा सकें उसके बेसिस पे. ठीक है, again Thank you, sir. there is no perfect answer, but I think this should give some idea about what next to do regarding this. What next? संजय, इसी संदर्भ में एक और क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अगर अभी तक हमने ये प्रूफ नहीं लिया है या हमने अपने
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से ये कंफर्मेशन नहीं लिया है कि आपने मल्टीपल सिस्टर कंसर्न कंपनी से मेरा एप्लीकेशन डाला है कि नहीं। इस केस में एप्लीकेंट, खासकर 2023 के जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर मार्च 2023 एप्लीकेंट्स, क्योंकि वन ऑफ द कमेंट्स जो मैंने पिछले आंसर में ये बोला था कि यदि आप कभी भी किसी भी साल आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन का टाइम खत्म होने के पहले ही आपको ये कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए। तो आप ये समझो कि जब आप शुरू के फेज में ही किसी एम्प्लॉयर से आप बातचीत करते हो तो आप ये समझो कि उनसे जॉब ऑफर लेना लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये कम्युनिकेशन उनको करना, उनका एक्नॉलेजमेंट ये लेना। ये सारी चीजें आप अपने पासपोर्ट देने के पहले कर लो, तब आप अपना पासपोर्ट दो या पासपोर्ट नंबर दो। अदरवाइज पासपोर्ट नंबर देने के बाद आपके पास कोई कंट्रोल है नहीं। दे हैव ऑल द डिटेल दैट दे नीड फ्रॉम यू विद इन द पासपोर्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग H1B रजिस्ट्रेशन। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको अपना पासपोर्ट अपने एम्प्लॉयर को देने के पहले उनसे जॉब से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस है, सैलरी निगोसिएशन का प्रोसेस है, टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद जो है आप ये कम्युनिकेट कीजिए कि चूंकि ये चीज़ बहुत हाईलाइट हो गई है एंड इसका जो असर है ना वो बहुत ही ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि एक बार आपको NOIR नोटिस मिल गया और एक बार आपका H1B रिवोक हो गया तो बहुत ही चांसेस कम हो जाते हैं फ्यूचर में कि आपके किसी भी फ्यूचर H1 एप्लीकेशन को या किसी भी वीजा एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए। तो यूएस का रास्ता समझिए एक तरह से ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। मैं ये डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट है, बट मैंने इतने लोगों का मैं सुना हूँ, इतने 15-20 साल से मैं भी इस एरिया को जानता हूँ, आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट। तो जितना भी सुना है, मतलब कहीं भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कहीं से इलीगल के आसपास भी आपको भटकता हुआ गलती से भी, जरूरी नहीं कि आपने जान के किया, गलती से भी आप उस एरिया के आसपास आप दिखे, आपका वो जोनिंग हो जाता है, आप कह सकते हैं। जहां थोड़ा सा डाउटफुल हुआ तो फिर केस खराब हो गया, बहुत ही मुश्किल होगा फिर फ्यूचर के किसी भी वो कराने का। तो इन सारे ही केस में यही बोलूंगी, शुरू के स्टेज में ही यदि आपने इंश्योर नहीं कर लिया है तो बाद में तो फिर आई थिंक इट्स when it comes to the legal things, then it's more of proving something by something tangible, और शब्द tangible नहीं होते हैं। What you said, what I said, that's not recorded, right? There's no dispute to follow this. So none of that will be validated as a proof, when somebody goes into the court and appeals against such courses, such things. So one has to be very, very extra cautious when doing this. And it's unfortunate it's happening. बट चलो, मतलब ये एक तरह से ये थोड़ा सा लूप होल को मिसयूज का थोड़ा सा माल प्रैक्टिस चल रहा था। तो इस साल आप समझिए कि उसका एकदम एक्सप्लोजन ही हो गया। बट उसी बहाने बबल कम से बस्ट हो कम गया। सबका, हाँ, यू कैन से कि whatever bubble was being built, that has already burst. It has created a lot of pain for a lot of us, lot of people we know. बट चलिए, एक बार इसके चलते जो है वो hopefully it should be fixed very very soon and in a nice way, ताकि फ्यूचर में इन चीज़ों को जितना फुल प्रूफ बनाया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों को भी ये बहुत क्लियर होगा कि वो भी ऐसे किसी भी माल प्रैक्टिस में, दोज हु हैव डन दैट विल थिंक 100 टाइम्स, मिलियन टाइम्स बिफोर दे डू अगेन। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के करियर से, उनके ऑप्शन से कितना कितना बड़ा खिलवाड़ है, लेकिन बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। थैंक यू संजय। संजय, मेरे एक कलीग ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। वो कह रहे थे उन्होंने 7 एप्लीकेशंस डाले थे, जिसमें से कि 2 H1B लॉटरी पिक हो गया है। तो क्या ये एक प्रॉब्लम हो सकता है? क्या चांसेस है NOIR मिलने का मेरे एक्स कलीग को? हाँ, तो ये क्वेश्चन में वी डोंट हैव ऑल द डिटेल्स दैट वी नीड। व्हाट आई मीन बाय दैट, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी H1B के केस में मल्टीपल एप्लीकेशंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय सिंगल कंपनी एंड इट्स रिलेटेड कंपनीज, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। यदि एक पर्सन ने 7 अलग अलग
कंपनी में 7 अलग अलग एप्लीकेशंस किए हैं और उसमें से उसको मल्टीपल 2 H1B लॉटरी पिकिंग्स भी होंगी तो कोई इशू नहीं है, दे कैन अप्लाई फॉर दोज H1s। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल केस एज पर यूएस, एटलीस्ट यूएससीआईएस की जो अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो बेसिकली यही है कि देखिए 7 एप्लीकेशन डालना भी प्रॉब्लम नहीं है और 2 H1B लॉटरी पिक होना भी प्रॉब्लम नहीं। तो आपको लगेगा अरे कैसे, दोनों में तो मल्टीपल है, एक से ज्यादा 7 है, एक से ज्यादा 2 है। तो नहीं, एक से ज्यादा की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक से ज्यादा ऐसा हो जिसमें उस कंपनी ने अपने सिस्टर कंपनी से, रिलेटेड कंपनी से या सो कॉल्ड कॉल्यूजन करके, मतलब जानबूझ के 10 लोगों का वो पांच अलग अलग कंपनीज में उन्हीं 10 लोगों का अप्लाई किया हो, तो बहुत क्लियर हो जाता है वहाँ की इंटेंट है वो चांसेस मल्टीप्लाई करने के, प्रोबेबिलिटी हाई करने का था और कुछ नहीं। सो बिकॉज इंटेंट देयर इज नॉट राइट, वो केस गलत होता है। तो इस केस में मैं बोलूंगा यदि उन्होंने 7 अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया है और जो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और तो वो प्रॉब्लम नहीं है। एक की बजाय 2 H1B लॉटरी पिकिंग आ गई, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग यहाँ तक, जहां तक मुझे नॉलेज है, समवन कैन करेक्ट बाय पुटिंग कमेंट यदि मैं गलत हूँ, बट इस केस में मल्टीपल H1B अप्लाई करना प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज वो अलग अलग कंपनी का है। अब वो बाद में वो कहाँ पे ज्वाइन करता है, यू कैन गो टिल देन ऑल्सो। ठीक, लास्ट में मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इन केस दिस पर्सन हैड अप्लाइड टू अ कंपनी जिसने जिसने एक से ज्यादा एप्लीकेशंस उसके लिए किया हो, सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। उस केस में NOIR नोटिस ऑलमोस्ट पक्का है कि आएगा ही आएगा, और उस केस में अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई उपाय नहीं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट Thank इज। you, बाकी Sanjay. हमारे जो पहले के वीडियोस हैं उसमें हमने काफी डिटेल में इस पर कवर किया है, दे कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, उसमें ये का ज्यादा डिटेल में इसके आंसर मिल जाएगा। Thank you, Sanjay. Thank you for your ओके, time.